This is the last word, and I'm Marya Shakil. Donkey flight is a dangerous, illegal backdoor route undertaken by many Indians to immigrate to countries such as the US, the UK, and Canada. The issue has come to spotlight after a plane carrying suspected victims of human trafficking was rerouted to India while on its way to Nicaragua after being detained in France. NDTV's Mohammad Ghazali brings you this ground report from Punjab and Haryana. And we ask this question: why young people are taking this dangerous route for their foreign dreams? As these visuals flashed across TV screens, Rahul from Haryana's Kurukshetra district was reminded of his Dunki journey to Libya. सर जो हमारा एजेंट था सर, उन्होंने सर हमारे को जो है इटली के लिए बोला था, भी मैं आपको इटली भेज दूंगा 12 लाख रुपए में। तो उन्होंने सर मेरे को 8 अप्रैल को मेरे को यहाँ से इंडिया से भेजा जी। सबसे पहले मेरे को भेजा दुबई जी। दुबई में हमें उसका पार्टनर मिला, कमल राणा नाम का है जी। और जी उसके बाद उसके पास राज में 4 से 5 दिन रहने के बाद जी उन्होंने मेरे को भेजा मिस्र में मेरा 24 घंटे का स्टे हुआ जी। और मुझे बोला गया कि आपको आगे लीबिया नाम की कंट्री है, वहाँ पे आपका 2-3 दिन का स्टे है, फिर वहाँ से हम आपको डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए इटली भेजेंगे। And this is what Rahul had to do to survive. सर वो खाना भी नहीं देते थे। खाना कितने दिन में खाना देते थे क्या? सर कभी कभी तो मतलब 48 घंटे में, मतलब 24 घंटे में हमें सिर्फ एक ब्रेड होता सर, इतना बड़ा बस ब्रेड। और सर पीने का पानी तो वहाँ पे है ही नहीं था, टॉयलेट वाला पानी पीते, जो टॉयलेट के अंदर 20 इतना खारा पानी वही पीते थे। But there are many like Shiv Kumar who have lost their loved ones and are still unaware of their whereabouts. Shiv Kumar sent his son to Portugal after mortgaging his ancestral land, and for the last 7 months he's been running from pillar to post for a clue as to where his son could be. The agent who sent his son to Portugal has been booked in an FIR, but there's still no news of Shiv Kumar's son. जी पैसा इकट्ठा ऐसा है कि मैंने अपने जो लोन बोलते हैं जिसको बैंक में अपनी ज़मीन गिरवी रख के हमने ये पैसा इकट्ठा किया और एजेंट से हमारी बातचीत जो हुई थी 12 लाख रुपए में तय हुई थी जी। आज तक हमें बच्चे के बारे में 8 जून तक हमारी बातचीत होती रही, लेकिन 8 जून के बाद आज तक हमारे बच्चे से कोई बातचीत नहीं हो पाई। लगभग 7 महीने का टाइम गुजरने वाला है। For many like Malkit from the Kathal district in Haryana, this route was fatal. The family got to know of his death after receiving this viral video. But how does this network of fraudulent agents operate in the region? We approached many travel agents to share the details, but no one was willing to come on camera. Finally, one of them spoke in detail. ऐसा है कि डोंकी 2 तरह की है। एक तो जंगल की डोंकी है जिसके अंदर पैसे कम लगते हैं, जैसे 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं जंगल की डोंकी का, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले यहाँ से हम किसी भी कंट्री में उतारेंगे, जैसे लैटिन कंट्रीज में उतारते हैं, या फिर आजकल एक काम चल रहा है टर्की से वीजा लेते हैं हम कोस्टा रिका में उतारा। कोस्टा रिका के बाद धीरे धीरे चलते पनामा से फिर आगे पार करते हुए जगह जगह पे अलग अलग अमाउंट देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले टर्की पहुंचे, टर्की में तकरीबन 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे ये कोस्टा रिका पहुंचते हैं, कोस्टा रिका पहुंचने के बाद इन्हें फिर 10 लाख रुपया देना है। उसके बाद ये जंगल क्रॉस करेंगे, जैसे ही जंगल क्रॉस करते हैं, जंगल क्रॉस करने के बाद ये मैक्सिको बॉर्डर पे पहुंचते हैं, फिर वहां 10 लाख देके उसके बाद फाइनल पेमेंट जो है मैक्सिको एंटर होने के बाद देनी होती है। और जो दूसरी डोंकी है वो है बाय एयर। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी बड़ी कंट्री का वीजा लेते हैं, जैसे जर्मन का, फ्रांस का, इटली का, शेनेगन का, कहीं का भी वीजा लिया। Now dozens of Indians are taking to YouTube, Instagram and TikTok to document their migration journeys, offering tips, route suggestions and risk assessments to hop from one country to the other. Especially the tricky forest between Colombia and Panama and the US-Mexico border. After this flight return from France, both Punjab and Haryana have swung into action to track the fake agents. Punjab has constituted an SIT to probe the issue of illegal immigration. Haryana claims it already has one, which has been going after the fraudulent agents. तो हमने एक एक्ट बनाया है और इस बार की कैबिनेट में वो पास
हम पुट अप कर रहे हैं उसको। ये जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं इनके लिए नियम कायदे बनाए गए हैं, और अगर इनके थ्रू कोई भागता है तो कार्रवाई के उसमें प्रावधान भी किए गए हैं। Most of the young men we spoke to claim that lack of job opportunities back home is the reason why they are compelled to take this illegal or dangerous donkey route to reach the foreign land. And while the government claims that much is being done to check on these illegal or fraudulent travel agents, it seems that the issue needs to be dealt with iron hand. With Kamal Sen in Kurukshetra, with Ankur in Ambala and Sunil Ravish in Kathal, in Chandigarh, Mohammad Ghazali for NDTV. And let me get you a story first. Joining me is Rajiv Singh. He is the late Malkeet Singh's brother. We'll try and connect with him to get his story. He's joining me from Kathal in Haryana. Aditya Bhati is immigration advisor. Nilesh Tribhuvan is advocate of the Supreme Court. And we also have Ambala Superintendent of Police, Jashandeep Singh Randhawa. Before I bring in all of them, let me get a word from Rajiv Singh. Rajiv Singh ji, मुझे अपने भाई के बारे में बताइए, उन्होंने कहाँ जाने की उनकी ख्वाहिश थी और क्या क्या हुआ? जी, उन्होंने यहाँ से यूएस जाने के लिए ही बात हुई थी हमारे एजेंट से, और उन्होंने स्टडी के तौर पर यहाँ पर पहले पॉलिटेक्निक कर रखी थी, मैकेनिकल ट्रेड से। और जैसे ही आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ही हमने एक कदम उठाया था, बल्कि उसके बाद भी ये जो हमारे साथ हादसा हुआ तो हमारे विलेज के उसके बाद में भी करीब 100 प्लस बंदे इसी तरीके से चले गए वहां पे यूएस में। और तो क्या आपके भाई जा पाए थे यूएस या उससे पहले ही? नहीं, रास्ते में ही उनके साथ ये हादसा हो गया, तो हम इसके बारे में बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था उनके आफ्टर, मतलब ये घटना होने के बाद करीब 23 दिन के बाद हमें इसके बारे में पता चला था। वो भी वाया सोशल मीडिया व्हाट्सएप के थ्रू कहीं ग्रुप टू ग्रुप वीडियो आई थी हमारे पास। तो क्या घटना हुई थी और वो कहां तक पहुंच पाए थे? वो जैसे यहाँ से अलमाटी होते हुए कजाकिस्तान से ट्रक्की से फिर वहां पर बता रहे थे कि आगे मैक्सिको लेके जाएंगे, तो उसके बाद में एजेंट ने बीच में जो रास्ता था ग्वाटेमाला में इनके साथ ये हादसा हुआ मेरे ब्रदर के साथ। तो उनके साथ वालों ने भी उस टाइम पे यही बता रहे थे कि हमारे ऊपर फायरिंग हुई थी, बट हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो अकेले जा रहे थे और उनके जो ट्रैवल एजेंट था उन्होंने क्या क्या वादा किया था? ट्रैवल एजेंट ने ये कहा था कि हम वहां पर उनको भिजवा देंगे यूएस में, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, मतलब यहाँ से मैक्सिको होते हुए मैक्सिको से साथ के साथ ही यूएस का बॉर्डर लगता है कि वहां से हम निकाल देंगे, यहाँ से डायरेक्ट मैक्सिको जाएगा यहाँ से। तो जो वो 20 बंदे बता रहे साथ थे, जो वो इस टाइम पे इनके ब्रदर के साथ हादसा हुआ है। और उसी बॉर्डर पे उनका पुलिस ने उनको शूट कर दिया था। और बाकी सब के साथ बाकी सब लोग पकड़े गए थे या वो लोग वापस आ गए हिंदुस्तान? नहीं, वो सभी आगे चले गए मैडम, वो सभी निकल गए वहां यूएस में, अब सब के सब वो साथ में बंदे थे। तो ये जो इलीगल रूट के थ्रू वो गए थे, तो फिर ट्रैवल एजेंट को आपने उनके खिलाफ कुछ एफआईआर कुछ एक्शन लिया? हाँ जी, उसके खिलाफ एफआईआर करवा रखी है मैडम जी। तो आप बाकी लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो डोंकी रूट होता है, डोंकी फ्लाइट, ये बहुत कॉमन अब हो गया है, खास करके पंजाब और हरियाणा के बीच में, वहां पर उन शहरों में काफी ये कॉमन है। देखो मैडम, जो भी ये कदम उठाता है, जो भी जाता है, सबको पता है कि देखो खतरनाक तो है ये रास्ता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है रास्ता, सभी को पता है। जब हमारे साथ हादसा हो गया था तब तो गांव के मतलब 20-30 लड़के ही गए थे तब तक तो वहां पे, और उसके बाद में भी 100 प्लस बंदा चले गया हमारे गांव से भी। तो सबको पता, देखो होना को तो क्या हो जाता रास्ते में, देखो सबको पता है कि इलीगल वे से जा रहे हैं, पर इसमें भी सरकार की नाकामी लगा लो, अनएम्प्लॉयमेंट का चक्कर है सारा, तो इसी करके रोजगार के लिए जाते हैं सब। चलिए, शुक्रिया राजीव जी हमसे बात करने के लिए। लेट मी ब्रिंग इन द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ अंबाला, जशनदीप रंधावा। रंधावा जी, इस तरह के केस ऑन एन एवरेज कितने रिपोर्ट हो रहे हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा होता है?
देखिए, हमारी जो एसआईटी थी इसका गठन 17 अप्रैल 2023 को हुआ था और इसमें अभी 8 महीने के अंदर हमारे पास जो ऑलमोस्ट 650 केसेस जो हैं यहाँ पे दर्ज हुए हैं। और इसमें जो अगर हम केसेस की बात करें तो सबसे अधिकतर केसेस जो हैं 182 केसेस अंबाला जिले के अंदर दर्ज हुए हैं और इसके बाद कुरुक्षेत्र में 156 केसेस हैं और सिमिलरली करनाल और यमुनानगर जो है वहां पे साइजेबल नंबर्स हैं। तो ये जो मोस्टली ये वाली बेल्ट है, पंजाबी स्पीकिंग बेल्ट जो है, यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं। और कोई खास पैटर्न दिख रहा है, कौन सी कंट्री लोग जाना पसंद करते हैं या कोशिश करते हैं वहां पहुंच जाएं, और क्या एज ग्रुप है? देखिए, इसमें मोस्टली जो +2 पास स्टूडेंट्स हैं, सबसे अधिकतर उन्हीं इसी वर्ग का जो डोंकी के सिस्टम में शिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा यही स्टूडेंट्स इसके शिकार होते हैं। और इसमें अगर हम कंट्रीज देखें तो सबसे अधिकतर जो केसेस हैं वो हमें कनाडा के मिलते हैं और इसके बाद यूके के और फिर कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ के। तो सबसे ज्यादा जो प्रेवेलेंट है वो कनाडा है जी। और एसआईटी सेटअप होने के बाद क्या क्या जानकारी और पता चला आप लोगों को? किस तरह से ल्योर किया जाता है, और अगर उनको पता है कि ये बहुत ही डेंजरस रूट है तो फिर भी क्यों ले रहे हैं लोग? देखिए, एसआईटी जब से हमारी गठित हुई थी तो हमारे जो मैंने बताया आपको 625 केसेस लगभग 8 महीने के अंदर दर्ज हुए हैं। उसके अंदर हम अब तक 500-525 अरेस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें काफी कई जो गैंग्स थे इस पूरे बिजनेस को चला रहे थे इस पार्ट में, वो भी पकड़े गए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो देखने में आता है कि ये तकरीबन एक व्यक्ति से लगभग डिपेंडिंग अपॉन कि किस देश में वो लेकर जा रहे हैं, अगर उसका यूएस या कनाडा का उस नॉर्थ अमेरिका की तरफ लेकर जाने की बात चलती है तो उसमें लगभग जो प्रेवेलेंट रेट्स हैं वो 40 से 50 लाख रुपए पर पर्सन के वो चार्ज करते हैं। और वो उनको पहले यहाँ से 2-3 अलग अलग कंट्रीज में लेके जाते हैं जिनमें नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज रहते हैं, और फिर वहां से उनको साउथ अमेरिकन कंट्रीज में वीजा लगना आसान हो जाता है और वहां से फिर उनको बाय फुट या बाय रोड उनको मैक्सिको बॉर्डर पे लेके जाते हैं और वहां से फिर उनको यूएस के अंदर एंट्री करवाते हैं। वो उनका ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग जो इसमें कई गैंग्स मिलके काम करते हैं। इसमें कुछ बड़े गैंग्स हैं हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर, उनके फर्दर जो एजेंट्स हैं, सब एजेंट्स हैं, हर एक ने अपनी कट रखी होती है। इसमें चाहे वो जो भी जिसका भी केस बनाते हैं उसमें उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स, उसकी पुरानी जॉब एक्सपीरियंसेस चाहे हों, वो सारी काफ़ी चीज़ें उनको फॉर्ज भी करते हैं ताकि उनको वीज़ा मिलने में आसानी हो। और फिर फाइनली अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं इस पूरे गैंग के, कोई फॉर्जरी करता है, कोई जो एजेंट्स होते हैं वो ढूंढ के ले आते हैं गांव लेवल से कि कौन कौन जाने का इच्छुक है, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं जो बड़े एजेंट्स हैं वो इनको बाहर भेजते हैं। और इसी के साथ ही जो डोंकर्स होते हैं प्राइमरीली मैक्सिको के अंदर, वो अपना रोल निभाते हैं। इनको ऑन फुट जो मेन फेंस है जो यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर, वहां से इनको क्रॉस करवाने में वो अपना रोल अदा करते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि हाउ डू यू रेगुलेट दिस? सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों को रेगुलेट करने की अभी काफी गुंजाइश है। हमारे यहाँ पे जो भी एजेंट्स काम कर रहे हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई रेगुलेशन या कोई रजिस्ट्रेशन का ऐसा सच प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए हमारी जो हरियाणा सरकार है, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन के अंदर, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज के नाम से एक बिल जो है वो हमारे विधानसभा में लेकर आ रही हैं, जो कि जल्दी ही कानून बनेगा और उसके थ्रू इनको फिर रेगुलेट करना आसान हो जाएगा, ताकि जो लोग इच्छुक हैं बाहर जाने के, उनको हम कहीं ना कहीं जो
वैध तरीका है उसके थ्रू बाहर जाएं, इसके लिए प्रमोट और इनकरेज कर सकते हैं। और जो इस टाइप के गैंग्स हैं जो ठगी कर रहे हैं, उनको हम क्लियरली आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे केसेस भी यहाँ पे हमारे दर्ज होते हैं, उसमें अक्सर जो कंप्लेनेंट्स हैं वो उसका जब तक काम ठीक चल रहा है, जब तक वो बाहर जा रहे हैं, तो वो कंप्लेन नहीं करते। वो हमारे पास उसी टाइम आते हैं जब वो उनका पैसा फंस जाता है, और जैसे ही अगर उनका पैसा पुलिस कंप्लेंट करने के बाद या केस रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर उनको उनकी जो भी उन्होंने अमाउंट दी थी वो वापस मिल जाती है, तो वो अक्सर देखने में आया कि वो कोर्ट में जाके हॉस्टाइल हो जाते हैं और अपने बयानों से पलट जाते हैं, और बल्कि जो एजेंट्स हैं उन्हीं के फेवर में बयान देते हैं, जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है ये काफी थ्राइव कर रहा है। All right, Mr. Randhawa, I appreciate your time. Thank you so much for sharing us the details of the investigation, which is ongoing, of course, right now. Aditya Bhati is licensed immigration advisor. We also have advocate of the Supreme Court, Nilesh Tribhuvan. Aditya Bhati, you know, they know the danger. They are aware of the challenges which is associated with it. But they still, take that nightmarish route to what promises to be a dream. This has been going on for way too long. But there are also reports that many have managed to cross. You know, if you listen to what his brother was saying, Rajiv Singh was saying that even after, although his brother was shot dead at the border, US-Mexico border, there are many from the village who managed to cross even after that. The hundreds have gone to US through that border, taken that route even after that. Correct. That is the issue. That the greed of going abroad, that desire to be settled abroad, whether it is illegally or legally, is the least of their concern. And like you rightly said, that because the majority number manages to cross, even a significant news or awareness or something like the demise of somebody while trying this route does not really shake people up, does not their decisions, whether it is the person going himself or herself or their elders and families. Nobody really gives it a thought. And that is the travesty of these times, that people are aware, like SP Sab said, people know what it is. Rajiv said people know what it is. They do it themselves. That's the reality of it. At the end of the day, none of these agents would survive. This nexus of sub-agents would not exist if there were not seekers of this illegal route. And that's the Yes, on an average, how much money is spent? I think anywhere around 40, if you're talking about US, 40 is a very, very normal figure for anyone. 40 lakhs upwards very, very easily for US. And how much time does it take to reach US? See, that's again, there's no guarantees. They will tell you that, look, we'll take you there. It may take up to 6 months. It may take up to 8 months. And that's really how it is. So, and everybody understands and accepts this fact. You know, they're fine with it. They know it's an illegal route. They know there will be barriers. They know they'll have to look out for the right time, the right moment. So everybody's okay with all of that. Yes, and so you have factored in that you are taking an illegal, dangerous route to another country. It's an illegal route because the entire immigration process is not through. So you can't really seek justice then, Nilesh. What is justice here? Nilesh Tribhuvan, if you can hear me. You have to unmute yourself, Nilesh. Can you please pardon? Yes, my question is that, you know, because you are an immigration lawyer, you understand how things work. These youth who are traveling from, parts of Punjab, Haryana, they have factored in the entire aspect that it's dangerous, it's illegal. Still, they are ready to take that route. The family knows about it. This is for small jobs that they will be doing. So they can't really seek justice. There'll be nothing like that I've paid to this person and I need that money back. Because what will you actually be saying? Because it's an agreement in many ways. It's about duping. That man is duping him.
just like Mr. Randhawa has already mentioned it to you earlier, there are more than 600 cases are being registered. If you see the conviction rate would not cross more than 1 or 2% in any case in all the immigration cases. Or mostly because all the witnesses, the complainant usually turns hostile most of the time. It's only because whenever their money gets stuck, they go to the police and they register an FIR. When the matter comes to the court, at that point of time, if the money is returned to them, nobody wants to pursue the cases ahead. That's why the encouragement to the all these agents, they get encouraged and they take all these illegal routes. As far as the government is concerned and law is concerned, the Article 21 of the Constitution of India provides right to travel abroad. That's one of the fundamental right. Until unless somebody complains that I've been, some wrongdoing has happened to me, then only the government can interfere or the police machinery can take a charge of it. Otherwise, it's practically impossible to, verify each of the passengers who's leaving the country. If you see the data, there are more than 45,000 people are leaving the country every day. So it is next to impossible to even verify who's possibly going and for what purpose they are going, until unless they complain to the government. So what will be the purpose of this SIT then? Yeah, so even if to my knowledge, even if the SIT is doing the investigation, at the max they'll be able to put certain norms and the regulation for the agents. But however, all the agents for at least for the travel agents who are doing the flight bookings and all that, they have to be registered with an ITA. So they can. I mean, the bill what they're going to introduce, I have not gone through that. But until unless they are registered with ITA, they'll not be able to book any of the tickets. So everything is already regularized. So it's just that the awareness needs to be there. The people should know. People should be aware. If you see the data in the USA recently, the Dunki, everybody is aware about the Nicaragua flight. More than 300 passengers were there. All of them landed in India. So some of the 275, 276 passengers landed in India. None of them were willing to, to disclose the names of the accused. So till today, nobody knows who had actually booked the flight. It was a charter. So the people should voluntarily come forward and give the complaint to the government or authorities. Without that, it is impossible for everybody to even investigate. So no FIR has been registered. No arrest has happened. It's been from 21st of December, to my limited knowledge. Yeah, 21st of December, what I recollect. Even the French government has investigated it. The French government could not find anything. Now they have converted the case. So the governments don't find anything illegal in this entire route? Isn't this an illegal process? Is it an illegal process? But when it is happening, when it turning into an illegal, that we need to see in what jurisdiction. Now, suppose there was a brother of the deceased. He has complained when the person has died in the USA while crossing the borders. So the offense has not happened in India. The only offense has happened in India: the forgery of the documents while collecting while applying for the visa. That's the only offense which has happened in India. And for that, the cases are being registered. So the law will take its own course. Yes. It's but almost unless something Aditya, illegal has to happen in India. Aditya, it's almost like an epidemic of sorts, and it's also because of lack of job opportunities. This promises to be a land of sugar and honey in many ways, but the entire route is very, very tough. It's very, very dangerous. Aditya, help us understand what is the kind of agreement that is reached between, say, a travel agent and the person who's interested in traveling? See, simply put, I don't think there's a realistic agreement. It's just somebody is spreading around the news in their circle that, look, I'm planning to travel abroad. I want to go abroad. Is there somebody who can help me out? And then obviously somewhere somebody who's the go in between the two people will connect somebody like this to an agent who says, look, I can facilitate this. This is how much it is going to cost you. This is the approximate time frame that it will take. This is the way you will pay us. And most of these guys will end up paying in cash. There are no receipts. There are no real agreements, so to speak. It's just a so-called word of mouth trust that, yes, these guys have been doing it for a while. They're probably
been able So to it's give almost you two like references. understood that you will be getting into trouble if you are caught. So Correct. that's the reason why the person who is indulging in it is also indulging in some form of crime, and only when a tragedy happens that the family informs the law enforcement agencies. So thank you so much for putting that story in context for us, Aditya Bhati and Nilesh. Thank you to Rajiv and Mr. Randhawa. Of course, this is part of several stories that will be put out on NDTV over the next few days. The donkey route, or the Dunki route, as it has become famous post that movie of Shah Rukh Khan. But certainly it raises a lot of questions regarding what is absent in India that makes these young boys take that very, very dangerous route. Thanks for watching.